Next question, what is the effect of increase in fixed cost? Reduces profit volume ratio, raises break even point, increases margin of safety, reduces contribution. Answer है raises break even point. Next question, which of the following is correct at break even point? Contribution equals to fixed assets, sales revenue equals to total cost minus variable cost, profit equals to fixed cost plus variable cost, sales revenue equals to variable cost. तो आंसर है contribution equals to fixed assets. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो यूज टू कंप्यूट द वेरिएबल कॉस्ट फॉर एनी वॉल्यूम ऑफ सेल्स टू डिटरमाइन ब्रेक इवन पॉइंट एंड द लेवल ऑफ आउटपुट रिक्वायर्ड टू अर्न अ डिजायर्ड प्रॉफिट टू डिसाइड मोस्ट प्रॉफिटेबल सेल्स मिक्स. सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो. फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड, ऑल ऑफ दीज. तो आंसर है ऑल ऑफ दीज. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स इज कैलकुलेटेड यूजिंग फिक्स एक्सपेंसेस एंड द कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो, variable expenses and the contribution margin ratio, fixed expenses and the unit contribution margin, variable expenses and the unit contribution margin. तो fixed expenses and the unit contribution margin थर्ड वाला जो है आंसर है इसका. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन मार्जिनल कॉस्टिंग एंड अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इज रिगार्डिंग द ट्रीटमेंट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, वेरिएबल ओवरहेड्स, फिक्स्ड ओवरहेड्स, प्राइम कॉस्ट. तो आंसर है फिक्स्ड ओवरहेड्स. Next question है, when is a business unit known to be a profit center? If its operation or departments are not directly involved in revenue generating activities but instead focus on elements of cost control. If its management is evaluated not only on revenues and expenses but also on asset investment. If its management is compensated based on the level of profitability. And last है, it is if its management is held accountable for both revenues and expenses and has the authority to make decision regarding its product, markets and sources of supply. तो आंसर है फोर्थ वाला. Next question, what is most useful information derived from a break even chart? Relationship between revenue and costs at various levels of output, volume or output level at which the enterprises break even, amount of sales revenue needed to cover enterprise variable cost और amount of sales revenue needed to cover enterprise fixed cost. तो आंसर है volume और output level at which the enterprise break even. What is the basic difference between static budget and a flexible budget? A static budget is based on one specific level of production and a flexible budget can be prepared for any production level within relevant change. Second है, a static budget is for an entire production but a flexible budget is applicable only to a single department. Next है, flexible budget allow management latitude in meeting goals whereas a static budget is based on a fixed standard. A flexible budget considers only variable cost but a static budget consider all costs. A static budget is based on one level, specific level of production. तो फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारा राइट है. नेक्स्ट क्वेश्चन है,